in big news. BJP protests against Rajasthan government are currently underway. So this is the protest against Ashok Gehlot. These protests are taking place in Jaipur. And Rajasthan is said to be ranking second in corruption, unfortunately, in the country. And as early as in July, 267 corruption cases were lodged against government officials. And that is a protest currently underway, taken by the BJP workers. These protests are taking place in Jaipur, and this specific protest is against the growing corruption they allege is happening in Rajasthan. Let's take a look at the reactions coming in. जनता के लिए खड़े होने की बात आती है तो निश्चित रूप से हमारे ये दायित्व है कि जनता के सुख दुख में, जनता के न्याय के लिए हमको जिस कीमत पे भी लड़ना पड़े लड़ेंगे। जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है और यहाँ की सरकार कहती है ये तो साधारण सी छोटी सी घटना है और बड़ी घटना दिल्ली में हो रही है इनके लिए। कभी राजस्थान की जनता को छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं और इनके खुद के विधायक कहते हैं कि खनन माफिया का सरगना खनन मंत्री खुद है। इनके खुद के विधायक त्याग पत्र दे रहे हैं दलित अत्याचार पे, इनके पार्षद त्याग पत्र दे रहे हैं, इनके खुद के मंत्री बोलते हैं बलात्कार में नंबर 1 है, लेकिन मर्दों का देश है, मर्दों का प्रदेश है। इतनी घिनौनी हरकतें कर रही है, इतनी घटिया सरकार है, इसलिए यह जन आक्रोश है और हम सरकार को जगा के रहेंगे। घेरेंगे, विधानसभा को घेरेंगे और राजस्थान के हित के लिए किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों पर हमारा संघर्ष अनवरत रहेगा। ये किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा हो गया है लॉ एंड ऑर्डर, आपने कहा। देखिए, ये तो सारे मुद्दे हैं ही, लेकिन आज हमारा फोकस कानून व्यवस्था पर था। उन मुद्दों के लिए जवाब मांगा है जो 7,94,000 मुकदमे दर्ज हुए, उस पर गहलोत सरकार जवाब दे। जो रोज 18 बलात्कार होते हैं उस पर जवाब दे, जो 7 हत्याएं होती हैं उस पर जवाब दे। हमने इन मुद्दों के लिए सरकार से मांग रखी है, लेकिन जिस तरीके से सरकार अशोक गहलोत हमसे डरता है, इसलिए पुलिस को आगे करता है, तो पुलिस के बल पर दमन करने की कोशिश की है, लेकिन हम लोकहित के लिए रुकेंगे नहीं। सतीश पूनिया जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद। So those are the protests currently going on. The BJP workers are alleging and protesting against the high rate of corruption in the state that they say, and also the kind of alarming growing numbers of rape incidents in the state, and of course those latest unfortunate killings that we witnessed, and especially the death of this particular 9-year-old काम करने का घटनाएं हो रही है हर रोज राजस्थान के अंदर, तुष्टीकरण की घटनाएं हो रही है, साधु संतों को, पुजारियों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये हर रोज की घटना है और उसके बावजूद भी अपराधी पकड़ में नहीं आते और मुख्यमंत्री कहते हैं तो छोटी सी घटना है, तो इन घटनाओं को छोटा बताते, तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये राजस्थान में हो रहा है। ये जो गुस्सा है ये पूरे राजस्थान का गुस्सा है, ये पूरे देश का गुस्सा है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पुराना गांव की जो घटना थी उसके संबंध में दिग्विजय सिंह जी का बयान था कि ये जो स्कूल है जहां घटना हुई वो आरएसएस से कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन बताया था। इसको लेकर जालौर में उनके खिलाफ मामला था। देखिए, आरएसएस का जो असर है वो तो पूरे देश में है, हर घर में है, लेकिन ये स्कूल आरएसएस का नहीं है और ये जो आरोप लगाना इनका एक ही काम रह गया है। हम तो कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो अपराधी हैं वो अपराधियों को इतना हौसला कहां से आ गया? क्योंकि पुलिस सिर्फ कानून को फॉलो करने वाले के ऊपर कानून थोपती है। ये सरकार पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है यहाँ पर, इसलिए खुली छूट मिली हुई है। चाहे पीएफआई हो या जो भी जो आतंकी जो यहाँ पे लोग हैं उनका अड्डा बन गया राजस्थान। आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, आप सड़क पर धरना लगा रहे हैं, आगे क्या
कानून व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहते, हम अपना आक्रोश दिखाना चाहते हैं। ये पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पीछे इनके जो सरकार है जो पुलिस का गलत इस्तेमाल करती है, दोषी वो है। और इसलिए हम कानून को मानते हुए यहाँ पे रुके हैं। अभी हमारा आप सब देश तक, पूरे राजस्थान तक हमारी बात पहुँचा रहे हैं, ये जरूरी है। आपको भी धन्यवाद। That was Rajyavardhan Singh Rathod there talking about the kind of unfortunate incidents and rise in rapes that were taking place in the state, and also highlighting that terrible incident against that Dalit boy who was beaten to death. Going across to my colleague Anshul, who has more details on this. Anshul, do we have any response from the government about these protests that are currently going on? Not as of now, Shilpa, but yes, these protests are not something that has happened spontaneous, but yes, these protests were planned by the BJP because over the last few months, in fact, we have seen the kind of law and order situation that has continuously deteriorated in the state of Rajasthan, starting from the killing of Kanhaiya Lal to the brutal murder of that 9-year-old kid who went ahead to drink water from a well. And most such cases, even just a few days ago in Jaipur, a teacher was burnt alive, whereas people were making videos of it. So yes, the situation in Rajasthan is definitely something, especially the law and order situation in Rajasthan is definitely something that has put the Rajasthan government on the back foot. So yes, today the senior leaders of the Rajasthan state BJP unit has now decided to come out and carry out this protest march in Jaipur. This protest is being led by Rajasthan MP from Rajasthan, Rajyavardhan Singh Rathod, and State BJP President Satish, Poonia, who have all reached there just to make sure that the continuous pressure that they are building on the Rajasthan government, on the law and order situation, that pressure does not die down. Because remember, in the next 5 to 6 months, in the next 1 year, we are going to see elections also happening in the state of Rajasthan as well. So yes, the state BJP is getting really very active and making sure that they make the right kind of noises when it comes to putting pressure on the Rajasthan government and tell the people of Rajasthan that this government is not able to handle the law and order situation in the state. We have seen many incidents happening even before Kanhaiya Lal. We saw the kind of incidents that happened in Alwar also, where there was a situation of a riot that almost broke out. But yes, the situation has remained tense since then in Rajasthan. There has been day in and day out, we have been hearing such stories where such brutal murders or targeted killings have been happening. So yes, the leaders of Rajasthan, especially the BJP leaders of Rajasthan, are making sure that they leave no stone unturned in propagating the message that this government has absolutely failed in maintaining law and order situation in the state of Rajasthan. And now it remains to be seen how does the BJP now take this forward, because what we have been told from sources within the BJP, especially in Rajasthan, is that they are going to be relentless